तो इन्वर्टिंग मैट्रिसेस क्या होती हैं पता है पहले से? हमने लास्ट क्लास में आइडेम्पोटेड मैट्रिक्स पढ़ा था। आइडेम्पोटेड मैट्रिक्स में ये था कि अगर उस मैट्रिक्स को सेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स सेम बनी रहती है, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो सिमिलरली इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका सेल्फ से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन। A square matrix A is said to be we भेज देंगे अभी is said to be involutory matrix if A square is just equal to identity, है ना? तो clearly identity matrix is the involutory matrix. तो एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं यू विल गेट आइडेंटिटी अगेन। तो दिस इज द involutory matrix. If a matrix we are taking the entries plus minus entries in the diagonal element plus minus 1 0 and up to all other 0 0 plus minus 1 and up to 0 and so on, ये मैट्रिक्स भी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस होती है। ठीक है, अगर हम बैकवर्ड डायगोनल पे मल्टीप्लाई करते हैं, बैकवर्ड डायगोनल पे 1 है तो वो भी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। या फिर बैकवर्ड डायगोनल पे हमारे पास निगेटिव -1 एंट्री हमने करा, माइनस ऑफ 1 0 0 अप टू -1 एंड 0, इसी तरीके से -1 अप टू। तो ये तुम्हारे पास जो एग्जांपल है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस। ठीक, तो कुछ फॉर्मेट है, कुछ जनरल मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस होती है। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग हियर, इफ n is an even positive integer and this t1 t2 up to dn by 2 are non-zero complex numbers, then the matrix this is your जिसमें हम इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इवन है तो इसमें इवन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो यू कैन जस्ट वी हैव, हमने पहले d1 यहाँ पर भरा, फिर हमने बैकवर्ड डायगोनल में d2 भरा एंड सो ऑन, इस तरीके से हमने भरते जा रहे हैं। तो इसके इनवर्सेस हम यहाँ पर इधर से भरते जा रहे हैं, मतलब इनके रेसिप्रोकल, like this is 1 upon d1 and this is 1 upon d2, इस तरीके मतलब हाफ
जो नंबर रोज हैं उसमें हमें D1 D2 D3 इस तरीके से भरना है। फिर जो है जो अदर हाफ हमारे पास बचे उनमें हमें रेसिप्रोकल भर देना है। तो अगर ऐसी कोई हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो भी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है तो लेट्स सी एग्जाम्पल की हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि n शुड बी इवन ऑर्डर, है ना। इवन ऑर्डर n जो है इवन नंबर होना चाहिए। मैट्रिक्स शुड बी इवन ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, दिस इज 4 by 4 ऑर्डर। जीरो लिखा, जीरो लिखा, जीरो लिखा, और यहाँ पर लिखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 2 आयोटा। एंड यहाँ पर हमने लिखा जीरो जीरो, यहाँ 4 लिख देते हैं, दिस इज जीरो एंड दिस विल बी जीरो। एंड इसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास टॉप मोस्ट हमारे पास होता है उसको हम सबसे बॉटम मोस्ट लिखते हैं। तो दैट इज योर 1/4 ये रहेगा, एंड दिस इज जीरो जीरो, एंड दिस इज 1/5 + 2 iota, and this is 0 0 and this is 0. This is a matrix of, this is 4 by 4. This is matrix is 4 by 4. ओके। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हमें 5 + 2 iota 4 1/4 एंड 4/4। तो हम देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल ही लिखे हुए। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, दिस इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ये इम्पोर्टेंट है। अगर कभी कहीं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स देते हैं तो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो इस फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। ठीक है, जनरली इस फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। याद इन द सेंस कि आप जब देखें तो आपको पता चल जाए कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ही लिखी हुई है ना। तो ये फॉर्मेट अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। और फिर हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज कर पाएंगे। खासकर आइगन वैल्यू के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैट्रिसेस। जो स्पेशल मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं ना, उनकी बड़ा रोल होता है आइगन वैल्यूज निकालने में। चलिए लेट अस सी। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस, है ना। आप देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन जस्ट से हियर द सम ऑफ टू matrices need not be an involutory matrices। Okay. Yeah, you can say if I'm just taking two matrices A and B, involutory matrices, then their sum A plus B may or may not be an involutory matrix। तो दिस इज अबाउट, अगर अच्छा हमारे पास हम देख भी सकते हैं क्यों नहीं, तो यू नो दैट अगर हमें चेक करना है तो क्लियरली वी हैव
we have this is a square is just equal to identity and b square is just equal to identity. This imply, now I'm talking about a plus b का whole square. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, this will you get a square plus of ab plus of ba plus of b square. ध्यान देना कि आप 2ab न लिखिएगा क्योंकि हम कम्यूट नहीं कर रही, जब कम्यूट करती हैं तभी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होता है इन अ फार्मूला वाइज, अदरवाइज इट विल बी लुक्स लाइक दिस, a स्क्वायर a से b मल्टीप्लाई होगा तो ab आएगा, ba आएगा एंड b स्क्वायर आएगा. एंड यू नो दैट कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड दिस इज योर ab प्लस ऑफ ba and plus this will again identity matrix. हमको क्या चाहिए, a plus b का whole square is again gives a identity matrix. It means that ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास जीरो होना चाहिए, इतना मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा. अदरवाइज इट्स नॉट अ सम इज नॉट अ आइडेंटिटी. ओके, इन जनरल सम जो है वो सम का स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है. आइडेंटिटी कब आएगा, जब ए बी प्लस बी ए प्लस आई जस्ट इक्वल टू जीरो या नल मैट्रिक्स. तो अगर हम इसी को लिखें कि कब हमारे पास सम तुम्हारे पास इनवोल्यूटरी हो जाएगा, व्हेन इज फॉलोज दिस कंडीशन, इफ ए एंड बी आर इनवोल्यूटरी matrices of same order then this a plus b, then a plus b is involutory if and only if ab plus of ba plus identity is just equal to 0. क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दिस a plus b is involutory matrices of the same order, then a plus b is involutory if and only if ab plus ba plus identity is just equal to null matrix. क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, दैट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट. क्या प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट इनवोल्यूटरी हो जाएगा? बताइए ज्योति. यस सर. प्रोडक्ट ऑफ टू इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस विल बी अगेन अ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स. करके देखो आप. यस सर. The product of two matrices क्या होता है, is an involutory matrix. सही लिख दें. देखो यस सर. अगर मान लो नहीं पता है तो हाउ वी कैन जस्ट सी कि हमें क्या करना है, ए बी का होल स्क्वायर निकालना है. इफ ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, हमको यही तो करना है. तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस, ए बी इंटू ए बी, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा. ओके, हमको क्या करना है कि बी ये चीज हमारे पास ए बी लिखी जा सके तभी हमारे पास पॉसिबल होगा ए स्क्वायर, अदरवाइज ए स्क्वायर आएगा ही नहीं, है ना. तो इसको हम, दिस इज ए और यहाँ पर बी ए है एंड दैट इज इक्वल टू बी. अब इस बी ए को जब तक ए बी नहीं लिख सकते हमारा काम नहीं चलेगा, कम्यूट. तब इसको हम एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बदल पाएंगे. तो इसका मतलब है
कि अगर हम यहाँ पर इस ए बी ए की जगह पे ए बी लिख देते हैं, देन यू कैन जस्ट से कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, यू विल गेट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, कम्यूटेटिव होना। तो ऐसा इन जनरल हर एक मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। हाँ, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कब होगा, इफ द मैट्रिसेस कम्यूट्स विद ईच अदर। ओके, सर अगर डायरेक्ट देखे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं लिख सकता नो इसको? नो नो नो, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर तभी आप ये कह रहे हो ना, वो ट्रांसपोज खुलता है या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट खुलता है या इनवर्स खुलता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं खुलता है। आपके दिमाग में जो रिजल्ट चल रहा है मैं जान गया हूँ। यू आर सेइंग लाइक दिस कि ए बी का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ना, दिस इज रॉन्ग। ये इस तरीके से रिजल्ट खुलता है इनवर्स के लिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ट्रांसपोज में हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज ए बी का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर हमें हमें कॉन्जुगेट को खोलना है तो ये डायरेक्ट खुलता है, ओके। ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। और अगर हमको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट खोलना है लाइक दिस, तो दिस इज बी स्टार इंटू ए स्टार। ये सारे रिजल्ट्स ओपन होगी, ना कि हमारे पास हम ए की पावर ए बी की पावर एन को हम ओपन कर रहे होते लाइक दिस, बी की पावर एन इंटू ए की पावर एन। दिस इज रॉन्ग। ओके, ओके। तो तो दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इन्वोल्यूटरी जरूरी नहीं कि वो इन्वोल्यूटरी हो। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स if this A and B unitary matrices, then AB may or may not unitary matrix। ओके, अच्छा कब होगा, जब ए बी इज इक्वल्स टू बी हो, मतलब कम्यूट करे। तो इसके लिए भी आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, इफ ए एंड बी टू इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस matrices such that AB is equals to BA, then the product, then the product AB is also involutory। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्केलर मल्टीपल, है ना। अगर एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वो भी रह जाता है इन्वोल्यूटरी?
बताइए। Scalar multiple of a involutory matrices is again an involutory matrices or not? बताइए ज्योति। अगर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं किसी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर, तो जो मैट्रिक्स नहीं आती है वो भी इन्वोल्यूटरी होती है या नहीं? सर वो तो होगी। आप पहले पेन से करके देखा करो, अब डायरेक्ट ना बोला कोई रिजल्ट। हम सेइंग कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो क्या के ए का होल स्क्वायर ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा? कि नहीं ना, के स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर आएगा ना, के हाँ। है ना, एंड दिस इज के स्क्वायर इनटू आइडेंटिटी आएगा। दिस विल बी नॉट इक्वल्स टू ना आइडेंटिटी। हम्म, We need identity. If we want matrix to be involutory, we know the square of that matrix is should equal to identity matrix. हम्म। पहले पेन चलाया करिए, ब्रेन बाद में चलाया करिए। हवा में कह देते हैं चीजें। The scalar multiple of involutory matrices need not to be an involutory matrix. तो यू कैन से कि हमारे पास ए, हमारे पास हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, दैट इज योर involutory matrices, and this is key. Then this K A may or may not be an involutory matrix. ठीक है। If A is n, अच्छा कब हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस होगा? इफ के स्क्वायर, है ना, जो प्लस माइनस वन। स्क्वायर जस्ट इक्वल टू वन हो जाए। और के स्क्वायर वन कब होता है? जब प्लस माइनस वन होता है ना। के इज जस्ट इक्वल टू प्लस माइनस वन। हमने ये देखा था ना कि दिस ए, के ए का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू के स्क्वायर इनटू आइडेंटिटी। हमें चाहिए आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वन। और एक कब पॉसिबिलिटी है? जब के इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो अगर के इज प्लस माइनस वन, इन दैट केस जो है हमारे पास वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बनी रहेगी। तो प्लस वन का मतलब तो मैट्रिक्स वो सेल्फ है। इसका मतलब उसका जो माइनस ऑफ द मैट्रिक्स इज अगेन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इफ ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स and this is key, is any complex number, then it's an involutory matrix if and only if this k is just equal to plus minus. Is it clear? नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर रिजल्ट की, व्हाट अबाउट द
इंटीग्रल पावर ऑफ ए है ना, ए की अगर इंटीग्रल पावर है तो उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे। इफ ए then 8 power 2n is just equal to identity matrix, and that is 8 power 2n plus 1 is just equal to a, where n is any positive integer. If a is an involutory matrix and a की power 2n will be equal to identity, but a की power 2n plus 1 is equals to a. It means अगर हम even integral power लेते हैं, that will be equal to identity, that will be an involutory matrix. If हम odd integral power लेते हैं, that will be a, तो वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। सॉरी, आइडेम्पोटेंट नहीं, मतलब वो मैट्रिक्स हमारे पास ए की इक्वल सेल्फ हो जाएगी और दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बोथ द केसेस वी कैन, कि वो इन्वोल्टरी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन्वोल्टरी मैट्रिक्स होती है और ए मैट्रिक्स भी इन्वोल्टरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो बोथ द केसेस हमारे पास इन्वोल्टरी मैट्रिक्स रहेगी इन एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर हमारे पास पावर 2 3 इस तरीके से है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन्वोल्यूटरी होती है और ए तो गिवन ही है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका मतलब जो इंटीग्रल पावर होता है वो भी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट और लिखते हैं। ये समझ में आया रिजल्ट नंबर 4। यस सर। फिफ्थ रिजल्ट लिखते हैं, इफ ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स देन ए डैश इज आल्सो ठीक है, if A is an involutory matrix, then A dash is also an involutory matrix. Okay. तो आइए फटाफट और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में आइडेम्पोटेंट को भी करा था, तो उसी तरीके से द ए, लेट ए बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स if small k is any complex number and n be a positive integer, then ki plus e, इसका जो पावर n है can be expressed as a linear combination
ऑफ आई एंड ए। तो ये आप करके देखिएगा कि कैसे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है ना। जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो एक चीज हमें पता था कि के आई इज अ स्केलर मल्टी दैट विल कम्यूट विद ए। वो ए के साथ कम्यूट करेगी, और कम्यूट करेगी तो हम उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकेंगे। और जहां पर हमारे पास इंटीग्रल पावर आएगी वहां पर हम अगर ऑड इंटीग्रल पावर है या इवन इंटीग्रल पावर है तो उसके उसके अकॉर्डिंग हम उसे ए रख लेंगे। ठीक है, ए। और अगर इवन है तो आई। और उस केस में हम देखेंगे कि हम सारा का सारा जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन था उसको हमने आइडेंटिटी और ए में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सेल्फ से करिएगा आप लोग। दूसरा है कि इफ एनी टू रोज या कॉलम्स की बात करते हैं ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स of the identity matrix are interchanged interchanged the resulting matrix is an involutory। आइडेंटिटी में कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी अ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर? 8th result, a square matrix A is involutory if and only if 1 by 2 and this is your A plus identity matrix is idempotent। है ना? इट मीन्स अगर हाफ ऑफ ए प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए जो है इन्वर्टरी मैट्रिक्स रही होगी। ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ एन मैट्रिक्स इज ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन डिटरमिनेंट में बी 1 और -1। तो इसका जो 1 होगा या फिर -1 डिटरमिनेंट आएगा। 10th result about the trace। so the trace that of n by n trace of a n by n involutory matrix always belongs to the set that is your negative integers minus n minus 1 and up to this is -1 0 1 2 up to n। तो अगर कोई ट्रेस है तो वो ट्रेस हमारे पास इसी सेट से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट
there does not exist a real matrix A of odd order such that A square is just equal to माइनस आइडेंटिटी। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा रियल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं एग्जिस्ट करती है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट अ रियल मैट्रिक्स ए ऑफ ऑड ऑर्डर such that A square equals to माइनस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, है ना। बट इवन ऑर्डर की एग्जिस्ट करती है, बट there exists real real matrices of real matrices A of even order such that A square is equals to identity माइनस आइडेंटिटी। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो यू कैन जस्ट सी 0 1 -1 0 ये है इवन ऑर्डर 2 by 2 ऑर्डर की है। इसका स्क्वायर करोगे तो